हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको सिंध असेंबली लिए चलते हैं, जहां पर बजट इजलास जारी है। सिंध असेंबली में बजट आज पेश किया जा रहा है और इस वक्त हम आपको ये ताज़ा तरीन मनाजिर भी दिखा रहे हैं सिंध असेंबली के करीब के। आज सिंध का बजट पेश किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें बजट पेश करने की मंजूरी दे दी गई थी और इस वक्त सिंध असेंबली में इजलास जारी है और आज सिंध का बजट पेश किया जा रहा है। सिंध असेंबली का इजलास जारी है। 10 खरब 43 अरब से जायद का बजट पेश किया जाएगा और सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है बजट की, जबकि बजट समरी पर वज़ीर आला सिंध के दस्तखत भी हो गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सूबाई महकमों में 46,000 नई आसामियाँ पैदा करने की सिफारिश भी की गई है। बजट इजलास अब से कुछ इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर पहले काबीना का इजलास हुआ था, जिसने बजट की मंजूरी दे दी थी। जी हाँ, सिंध असेंबली से इस वक्त बराह रास्त आप देख रहे हैं स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत ये इजलास होने जा रहा है। बजट इजलास है और हुकूमत की जानिब से ये 5वां बजट पेश किया जाएगा। सिंध असेंबली में 10 खरब 43 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ पेंशन में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई है। 10% है वो भी। सूबाई महकमों में 46,000 नई असामियाँ पैदा करने की भी सिफारिश की गई है। आपको बताएं कि इस वक्त तमाम अरकान असम्बली पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। आगा सिराज दुरानी स्पीकर यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जेर सदारत बजट पेश किया जाएगा। सिंध असेंबली में 10 खरब 43 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। इस वक्त कार्रवाई जारी है इजलास की और आज बजट पेश किया जा रहा है। सिंध असेंबली का बजट इजलास जारी है। 10 खरब 43 अरब से जायद का बजट पेश किया जा रहा है। For the year 2016-17. The budget statement are presented. Now the budget speech by the Honorable Chief Minister. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Speaker, sir, before I start my actual presentation of the budget, there are a couple of things that I wanted to present before the House. सबसे पहले तो मैं जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं ऑपोजिशन साइड के, उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं पिछले साल जब बजट प्रेजेंट करने से पहले एज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की थी और कोशिश की थी कि जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो अपनी बजट में इंक्लूड करें। इस साल अनफॉर्चुनेटली कुछ अगर सुन लें मेहरबानी करके, इस साल मैं उस तरीके से मीटिंग्स नहीं कर सका, लेकिन मैं कमिट करता हूं कि ये बजट के सेशन के दौरान मैं इंडिविजुअली हर पॉलिटिकल पार्टी से मिलूंगा ताकि उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस हो तो हम कोशिश करें कि उनको इनकॉर्पोरेट करें जो भी जायज़ होंगे। लेकिन मैं बजट प्रेजेंट करूंगा और इंशाल्लाह ताला जो डिबेट्स होंगी उसमें पता चल जाएगा कि कोशिश हमने यही की है कि पूरे सिंध के लोगों उम्मीदों से वाबस्ता ये बजट बने। स्पीकर साहब, दूसरी अहम चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ, बजट स्पीच में भी इसका जिक्र कहीं ना कहीं ज़रूर है बजट प्रेजेंटेशन में, लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल जो हालात हैं उनके हिसाब से अलग से बजट स्पीच शुरू करने से पहले मैं जिक्र ज़रूर करूँ, और वो है हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे हमारे सूबे में जो इस वक्त बिजली ना होने की वजह से हुआ, उसको करता हूँ है ना। मुझे प्यारे सूबे सिंध सां ज़्यादती कई पई वञे। असां हिन मुल्क जे 70% एनर्जी प्रोड्यूस कंदो आहे सूबो। आइन कॉन्स्टिट्यूशन में इहो लिखियल आहे त जे सूबे में गैस पैदा थिए या एनर्जी पैदा थिए पहिरियों हक़ उन जे रवासिन जो आहे।
पर या तमाम दुख जड़ी गाल आए जो सिंध असम्बली का सिंध असेंबली का इजलास जारी है। 10 खरब 43 अरब से जायद का बजट पेश किया जाएगा। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है बजट की। वजीर आला सिंध इस वक्त इजलास से खिताब कर रहे हैं। सिंध असेंबली का इजलास जारी है। 10 खरब से जायद का बजट पेश किया जाएगा। आज मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ सूबाई महकमों में 46,000 नई असामियाँ पैदा करने की सिफारिश भी की गई है। सिंध असम्बली में 10 खरब 43 अरब से जायद का बजट पेश किया जा रहा है। सिंध काबीना ने इस बात की मंजूरी भी दे दी है। बजट से कबल आपको बताएं कि जो तजावीज़ दी गई थी उसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई। मुराद अली शाह इस वक्त आप देख सकते हैं कि खिताब कर रहे हैं, इस असम्बली में मौजूद हैं। आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली में इस वक्त इजलास जारी है। बजट इजलास है। हुकूमत की जानिब से 5वां बजट पेश किया जा रहा है। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। आज सिंध का 5वां बजट पेश किया जा रहा है। 10 खरब 43 अरब से जायद का बजट पेश किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले सिंध काबीना का इजलास हुआ था और उस इजलास में मंजूरी दी गई थी बजट की तमाम तजावीज़ की। बजट में सरकार में आपको बताएं कि सरकारी नौकरियों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है और कहा गया है कि सूबाई महकमों में 46,000 नई असामियाँ पैदा की जाएं, ये सिफारिश दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। सिंध असम्बली का 5वां बजट आज इस हुकूमत का पेश किया जा रहा है और इस बजट के इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास हुआ था और जिसमें इस बजट की मंजूरी दे दी गई थी। सिंध असम्बली का इजलास जारी है जिसमें 10 खरब से जायद का बजट पेश किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सूबाई महकमों में 46,000 नई असामियाँ पैदा करने की भी सिफारिश की गई है। जी हाँ, इस वक्त आप देख सकते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मौजूद हैं और बजट के हवाले से बातचीत की जा रही है। सिंध असम्बली में आज हुकूमत की जानिब से हुकूमत का 5वां और आखिरी बजट पेश किया जाना है। 43 अरब से जायद का ये बजट है जो कि कुछ देर में ही पेश किया जाएगा। आगा सिराज दुरानी स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, उनकी ज़ेर सदारत इस वक्त इजलास जारी है। सिंध काबीना ने मंजूरी भी दे दी है इस बजट की। बजट समरी पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से दस्तखत भी कर दिए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अगर बात की जाए तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सूबाई महकमों में 46,000 नई असामियाँ पैदा करने की भी सिफारिश की गई है। बजट इजलास शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में बजट पेश किया जाएगा। ये बजट 10 खरब 43 अरब से जायद का बजट है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी मौजूद हैं इजलास में और वफाकी काबीना आपको बताएं कि इस वक्त सूबाई बजट पेश किया जा रहा है और अब से कुछ देर पहले सूबाई काबीने का इजलास हुआ था। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। 10 खरब 43 अरब से जायद का बजट पेश किया जाएगा। I am presenting the budget in the holy month of Ramadan, and I thank Almighty Allah for bestowing this opportunity before me. This past year has been a year of phenomenal changes both in our country and internationally. As citizens of the world, we must strive to keep pace with the change. There is great potential in Sindh, its people, its resources, and the unique position it holds in the country. However, we cannot afford to be lazy and think that the growth will take care of itself. It is only through smart choices, informed decision making, and unrelenting efforts that we can forge ahead for a better future. Sir, since being sworn in as Chief Minister, my cabinet and I have been singularly devoted to progress and uplift of this province. We have overseen the upgradation of schools and establishment of colleges and universities. We have renovated and constructed the lining of canals. We have initiated installation of solar powered tube wells. We have established agro export processing zones. We have committed to the training of law and order personnel. We have charged through the building of hospitals and roads, and through dedicated attempts have overseen the inclusion of transport systems
within CPEC, to name just a few. Mr. Speaker, the task before us was arduous and demanded single-minded focus and perseverance. We are armed with the vision of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. The sagacious and visionary leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari and President Asif Ali Zardari emboldened us to take necessary decisions and tough stances. It was not an easy road, but together we have managed to make great strides. I believe we are on the path towards a healthy, educated, safer, prosperous and modern Sindh. The leadership of Pakistan People's Party believes in outlining policies which have far-reaching long-term benefits for the nation as a whole. As a humble worker of the party, my team and I strive to serve all Sindh in order to bring the people and the resources to their full potential. We want to ensure that our future generations grow up in an environment which maximizes prospects for growth and development in all sectors of the society. We strive to serve the people of Sindh to the best of our abilities, and it is these efforts and sacrifices of the Pakistan People's Party and its leadership that has blessed us with the gift of democracy. As Mohtarma Benazir Bhutto Shaheed said, and I quote, "Pakistan's future viability, stability, and security lie in the empowering of its people and building political institutions. My goal is to prove that the fundamental battle for the hearts and minds of a generation can be accomplished only under democracy. Keeping in mind that we are custodians of a great trust, we have never compromised our principles of serving the people of Sindh, regardless of caste, creed, or religion. We must concentrate on providing equal opportunity and economic empowerment across the board in both urban and rural Sindh. Poverty and ignorance restrict growth, pushing us backward. No matter where it is situated, only when our people have access to the best health care, education, and economic opportunities will our goals be accomplished. The only way forward is together, as a nation, as a people, as a member of this esteemed assembly. एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद और मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने." जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासी मुहावमत पे यकीन रखा है। हम एक नजरियाती जमात और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारकुन हैं। हमारा मकसद रंग और नस्ल, मजहब, अकीदे, ज़बान से बालातर होकर अवामुन्नास की खिदमत करना है। इस मकसद की खातिर हम खुद चलकर अपने सियासी मुखालफीन के दरवाज़ों पर दस्तक देते आए हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। हमने अपने दौर हुकूमत में तरक्की के मुख्तलिफ अहदाफ बड़ी लगन और तनदेही से हासिल किए हैं। आज का सिंध सरमायाकारी के लिए एक महफूज और मौजू इंतखाब है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने सियासी इख्तलाफात सिंध की तरक्की की राह में हायल ना होने दें। Mr. Speaker, sir, I want to say with great regret that the hurdles we faced in the Abbtakk were compounded by the federal government. The federal government is a major contributor to Sindh finances, comprising 75% of its entirety. It is a fact that these shares inevitably fall short of estimates we are provided every year. As a result, there is ambivalence and inconsistency in achieving our outlined targets. We have always extended the maximum possible support to the federal government, but this continuous oversight is disheartening to say the least. We hereby urge the federal government to ensure that Sindh is given its fair share of resources in a timely and efficient manner. The failure of the federal government to grant the 9th NFC award yet again is proof of the inefficiencies plaguing the system at such high level. Mr. Speaker, this budget represents a continuation of our policies and is testament to our leadership's consistency and single-mindedness towards the uplift of the people who have placed their faith and trust in us. Mr. Speaker, I will now present the revised estimates for the year 2016-17. Against an estimated budgetary amount of Pak rupees 854.5 billion, the total receipts of the province for the current financial year stand at 873.9 billion. As mentioned earlier,
we are facing a shortfall on account of federal transfers. During 10 months of this financial year, against budgeted receipts of 477 billion, we have only received 419 billion. Based on these figures, we will be facing a shortfall of about 70 billion rupees at the end of the financial year. Sir, ये 10 महीने का बताया, अगर 11 महीने की देखें पोजीशन, तो हमें बजट एस्टिमेट्स में, आप सबको याद होगा, आपकी किताबों में होंगे, 493 बिलियन प्रॉमिस किए गए थे फेडरल ट्रांसफर्स के मद में, जो एनएफसी जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसके मद में। वो 493 बिलियन ड्यूरिंग द ईयर डाउनवर्ड रिवाइज करके 480 अरब कर दिए। 13 अरब तो उधर हमें पता चल गया तो हमें कम मिलेंगे, ये तो पहले ही बता दिया था। 11 महीने में अगर वो 480 अरब को 11 महीने में करें, 40 अरब रुपए एक महीने में बनते, 11 महीने में 440 अरब मिलने चाहिए थे, हमें 11 महीने में मिले हैं 372 अरब, यानी 68 बिलियन शॉर्ट, 68 अरब रुपए कम मिले। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा करना है, वो वादा उन्होंने जब किया था, जब बजट पास किया था आज से 1 साल पहले, यानी 493 अरब का, तो आखिरी महीने में उन्हें 121 अरब रुपए देने, और जो वादे से तो वो वैसे ही मुनारिफ हो गए, उन्होंने अपने टारगेट्स रिवाइज डाउन कर दिए। जो रिवाइज डाउन टारगेट्स हैं उसके हिसाब से जून के महीने में उन्हें 108 अरब रुपए हमें देने, ताकि 440 अरब रुपए पूरे हो सके। मुझे उम्मीद है, मैं तो दुआई मांग सकता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट अपना वादा पूरा करे और 108 अरब जो रह गए वो हमें आखिरी महीने में दे, ताकि हमने जो बजट इस साल का खत्म करने और अगले साल का बजट बनाया है, ये इन्हीं नंबर्स को देखते हुए बनाते हैं, ताकि हम अपना बजट जो लोगों की उम्मीदें हमारे हैं वो पूरी कर सके। अगर पैसे ही शॉर्ट मिलेंगे, 68 अरब रुपए कम मिलेंगे, तो ऑब्वियसली जो है हमारे कट लगेंगे। लेकिन मैं बताऊंगा कि इस साल हमने डिस्पाइट रिसीविंग लेस मनी किस तरीके से मैनेज किया है कि डेवलपमेंट को हम अफेक्ट ना हो उसमें। सर, जो फेडरल पीएसडीपी है उसमें हमें प्रॉमिस किया गया था 12.2 बिलियन, और उसको रिवाइज डाउन करके फेडरल पीएसडीपी में जो हमें पैसे दिए जाते हैं 5.9 बिलियन कर दिया गया है। जो मैंने शुरू में कहा था ना, जो मुझे कुछ लोगों ने जिस पे कुछ कमेंट्स किए थे, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट अपने वादे पूरे नहीं कर रही, ये उसका प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। Sir, on the other side, we are largely able to achieve our provincial tax receipt targets. The Sindh Revenue Board and the Excise Taxation and Narcotics Control Department were able to achieve the targets. However, non-tax receipts were compromised due to fewer land transactions during the current financial year. The provincial tax and non-tax receipt is revised to 159.29 billion against an estimated target of 166 billion. हमने 166 billion का टारगेट रखा था और रिवाइज एस्टिमेट में तकरीबन 160 अरब रुपए, 159.29 बिलियन टू बी एग्जैक्ट, हमने रखा हुआ है। Mr. Speaker, on the expenditure side, the budget has been revised from rupees 869.11 billion to rupees 866.95 billion. The current expenditure has been revised from 606.96 billion from 572.76 to 606.96 billion. So this increase primarily, और अभी मैंने जिक्र किया था, is made on account of settlement of long-standing electricity dues, जिसके मद में हमने 27 अरब रुपए पे किए हैं, और 25 बिलियन आउटसाइड बजट हमने रखे थे, जिस वजह से नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपको ज्यादा नजर आ रहा है। ये पिछले सालों के थे। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, द बजट द बिल्ड अमाउंट वाज 77 बिलियन, और जो हमने रिकंसाइल करा के 50 अरब रुपए राइट ऑफ कराए, और वो नो ड्यू सर्टिफिकेट विद 0 मीटर्स एज ऑफ फरवरी 2017 मैंने आपको भी दिखाया, वो 77 बिलियन से 50 बिलियन राइट ऑफ करा के हमने 27 बिलियन एक साल में पे करके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल सारे क्लियर किए हैं, अगेंस्ट एन एस्टिमेटेड एलोकेशन ऑफ 225 बिलियन। सो इसमें आगे मैं बताऊंगा व्हेन आई टॉक अबाउट द डेवलपमेंट साइड। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द करंट फाइनेंशियल ईयर recorded the highest utilization of development funds. By the year end, current financial year, we'll be able to spend 88% of the development budget, which is 20% higher than last financial year. It reflects on our growing capacity and our rational financial management. We have revised our release policy and decided that
release of allocated funds in one go for schemes to be completed in the current financial year, release of allocated funds for ongoing schemes in 2 equal installments, total release of 502 schemes earmarked to be completed during current financial year, including 355 schemes kept on fast track. So in सारी चीज़ों के इसमें आगे बताऊंगा, we've been able to complete 536 development schemes in the current financial year. So the next year budget 2017-18. So the total province, the receipts of the province for the financial year 2017-18 are estimated at Pak rupees 1.02 trillion. अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने ट्रिलियन का मार्क, पहले हम बिलियंस में बात करते थे, अब ट्रिलियंस में बात किया करेंगे, ट्रिलियन का मार्क अचीव कर लिया है. Receipt estimates reflect an increase of 17% over budget estimates of Pak rupee 54.5 billion for current financial year. Receipts from federal government on account of revenue assignments, trade transfers and grants are estimated at Pak rupees 627.3 billion. Receipts from federal government are 65.1% of the total receipt of the province. Receipts of the federal PSDP are estimated at 27.3 billion. ये सर बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था 12.2 बिलियन, लास्ट ईयर दिए थे 5.9 बिलियन. इस साल भी हमारी फेडरल पीएचडीपी में बहुत कम एलोकेशन रखी गई थी, लेकिन टाइमली इंटरवीन करके मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो बात करते रहे. मैंने बात की, हमने अगले साल फेडरल पीएचडीपी में सिंध का जो शेयर है, जो सिंध के अंदर सिंध गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगी, उसके लिए 27.3 बिलियन जो है एलोकेट किए हैं. Receipts on account of foreign project assistance, budgetary support and grants are estimated at Pak rupees 42.7 billion. Receipts from provincial owned resources including tax and non-tax receipts are estimated at rupees 199 billion. The targets for provincial owned resources have been increased by 16.5%. On the expenditure side, the outlay of the budget is estimated at Pak rupees 1.04 trillion as against budget estimate of Pak rupees 869.11 billion, reflecting an increase of 15.25%. We are looking into it. Please keep quiet. Listen मैंने to सुना the बजट की honorable कॉपीज chief. मांग रहे हैं, सबको मिल जाएंगे अभी. नासिर शाह साहब गए देने के लिए. The current revenue expenditure, including current revenue expenditure of Pak rupee 66.47 billion and current capital expenditure of 32.64 billion stands at Pak rupees 699.11 billion. For next financial year, current expenditure constitutes 68.2% of the total provincial budget, reflecting an increase of 14% over estimates of Pak rupee 572.7 billion for the current financial year. Mr. Speaker, estimates of development expenditure for financial year 2017-18 are pitched at 274 billion. This allocation is unprecedented and an all-time high. It speaks volumes about our efficient resource allocation. Sindh has witnessed a decade of sustainable development. We are committed to take Sindh to new heights of progress and prosperity. Mr. Speaker, during the current financial year, we undertook interventions to improve financial management and reporting. We have submitted before this House quarterly budget execution reports. Also, for successive years, we have been preparing the budget strategy paper, unfolding commitment of the government towards transparency and disclosure. I hope that in future such documents will generate discussion and response from this House that we can improve further. This people's government has remained overly cautious about the growth in size of government vis-a-vis service delivery. It is the responsibility of a government to create employment opportunities. However, such creation of opportunities should be carefully planned. During our tenure, we have only made appointments based on need while ensuring meritocracy. For next financial year, we have created around 49,000 posts. The major impact is on already employed but abandoned lady health workers. Over 25,000 employees of lady health workers will be incorporated in the service of Sindh. Besides, 10,000 personnel will be recruited in Sindh Police. Mr. Speaker,
US President Franklin D. Roosevelt famously said, "Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely." The real safeguard of democracy, therefore, is education. In this day and age where extremist ideologies and terrorist threats from without and within run rife in our society, education is our only hope. For only education will ultimately protect us from a bleak future where hatred, bigotry, and separatism make up the prevalent mindset. Our children and our youth are literally the future of our nation. If we are to prevail as a fair, just, and emancipated people, we must invest heavily into our schools and especially our teachers. We must take a look at the curriculum being followed in the schools to ensure that they are free from extremist ideas and train our teachers so that they take a genuine interest in promoting inquisitiveness and curiosity in our children from the outset, such that our future generation comprises of thinkers and innovators in every field of inquiry. Thus, the people's government has allocated the highest percentage of resources towards education in the year 2017-18. It will see an increase of 24% over Sir, I have two things to say here. First of all, this is not entirely correct. Secondly, I just went through the teachers I understood were, while I was coming here, I heard that the teachers were also demonstrating today because of their salaries. And I saw a quote from the German Chancellor, Angela Merkel. So teachers in Germany are the highest paid. They have salaries more than anybody else, even parliamentarians may be anything. So when the engineers, judges, and doctors asked Angela Merkel for the same salary, she told them, and I quote her, "How can I compare you to those who taught you?" So we need to pay teachers, and we need to ensure that they teach our children, because only in that lies our future. Unless our teachers are properly paid and our teachers impart education to our children, our future is not going to be that bright. Sir, I would like to present that the increase in non-salary allocation of education is much higher and has been increasing over the years. For the next financial year, we propose to enhance the budget for education to park rupees 202.2 billion from 163.12 billion. Grants for universities and education institutes have been kept at rupees 5 billion. So during the current financial year, we had allocated 17.23 billion for ADP of education sector. 48 important development schemes have been completed during the current financial year. For better and well-coordinated administration of the sector, education department has been bifurcated. We had the experience of over-exhausted administration in case of education department. It was expedient to simplify the administrative structure both for improvement of education and for the ease of employees. So, सर जो एक पहले से प्लान था एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के दो हिस्से बना दिए ताकि ज़्यादा फोकस ले सकें. So we have constructed 150 shelterless school buildings, 50 school buildings constructed to upgrade existing primary schools to middle schools, 275 buildings of primary, elementary, secondary and higher secondary schools renovated and rehabilitated. Sir, Cadet College Gatab has been completed at a cost of rupees 1.5 billion. Additional infrastructure facilities have been provided at Cadet College Pitaro and Cadet College Sangar. 23 school buildings have been completed in District Sakhar and Khairpur under USAID funded Sindh Basic Education Program. 50 schemes will be completed during the next financial year. So 48,000 youths have been trained in approved trades. There are 283 approved trades by the Benazir Bhutto Shaheed Human Resource Development Research and Development Board. 39 institutions were rehabilitated, renovated by STEFTA to improve capacity and efficiency through World Bank assisted skill development program. Sir, iske pehle bhi zikr ho chuka hai. We have introduced the biometric system in the school.
and the World Bank has acknowledged this. The Sindh school monitoring system spreads over 15 districts to the remotest parts of the province. Plans are underway to expand it to the entire province, sir. The first digital system in the education sector in Pakistan allows transparent and efficient monitoring of staff, students and school infrastructure. More than 210,000 teaching and non-teaching staff have been profiled using biometric information covering more than 26,200 schools. So this has been done only in the province of Sindh. Through the current revenue side, following achievements were made. Through fair and transparent process, 23 higher secondary schools have been outsourced to reputed private organizations under public-private partnership mode. Textbook worth rupees 2 billion have been provided to students free of cost. To encourage female participation, an amount of Pak rupee 1.5 billion has been spent on stipends. Funds of Pak rupee 1 billion meant for school management committees were released and utilized. Pak rupees 2 billion have been spent on school infrastructure development. School consolidation grant of 1.17 billion was provided during current financial year for provision of missing and additional facilities. Following major intervention expected to be completed during next financial year. Shaheed Benazir Bhutto University of Veterinary and Animal Sciences Sakrand at Shaheed Benazirabad at a cost of Pak rupees 1.1 billion. Quaid-e-Azam University of Engineering, Science and Technology Constituent Colleges campus at Ladkana at a cost of Pak rupees 2.6 billion. आप खामोश होके कभी बैठ सकते हैं? Do not disturb. Please do not disturb. Development of Department of Food Engineering and Ancillary Infrastructure at NED University of Engineering and Technology, Karachi. Rehabilitation of existing infrastructure, development of basic facilities at University of Sindh, Jamshur at a cost of rupees 151 million. 120 million have been allocated for strengthening of key science laboratories in government high schools at Talka level across the province. Strengthening of infrastructure, phase 1 replacement of water and sewage network at University of Karachi at a cost of rupees 129 million. 131 million for development of Dawood University of Engineering and Technology, Karachi. Mr. Speaker, it is very important to recognize the efforts of hard-working students. Sir, मैं ख्याल है इस पे मैं बाद में आऊँगा when I announce the measures later. हमने एक scholarship program शुरू किया, but ये मैं आगे दोबारा जिक्र करूँगा इसका. Another important initiative of the Government of Sindh is creation of endowment fund for colleges and universities. For next financial year, we have kept rupees 1 billion for the said endowment fund. The fund aims to provide financial assistance to students. Also, an amount of rupees 1 billion has been kept for free registration and board examinations at all levels. Sir, इससे पहले जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड में स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फी, इनरोलमेंट फी देते थे, हमने वो माफ़ कर दी है और वो इनरोलमेंट फी और एग्जामिनेशन फी बोर्ड ऑफिसर्स को हुकूमत सिंध दिया करेगी. Mr. Speaker, sir, I would like to commend the efforts of the Sindh Education Foundation towards increasing the quality of education for some of the province's most underprivileged areas. The foundation is serving almost 500,000 students in 2,100 schools all over Sindh. For next year, we plan to increase its outreach to 650,000 students through a network of over 2,400 schools. The foundation has enhanced the number of schools and students at primary level. Around 80,000 students of 400 elementary and secondary schools are being served. The foundation has also launched adolescent and adult learning program for those less privileged who were deprived of education in the early years of life. Also, the foundation has initiated a Teach for Change program through which young graduates from reputed institutions are encouraged to teach in poor locality schools. Government of Sindh has been providing monetary support to the foundation. For the next year, we intend to provide Sindh Education Foundation rupees 8.08 billion, an increase of 7% over the allocation of current financial year. Also, during the next financial year, construction of Sindh Education Foundation complex will start at a cost of Pak rupees 145 million. Mr. Speaker, I come to health. The provision of quality health is the responsibility of every government. This is the basic right of all its citizens.
instead of a privilege for a few who can afford to pay expensive doctors in private clinics. Beginning at the basic, vaccines are the most effective health intervention in terms of economics. They lower the possibility of disease and ensure that children grow up healthier and better equipped to fight with disease throughout their lives. This lowers the cost of health care required in the future. Healthcare remains a priority sector and resource allocation for the sector keeps on expanding. For the next year, an allocation of Pak rupees 100.32 billion is proposed, and as against an allocation of rupees 79.88 billion during the current financial year. The ADB of health is pitched at Pak rupees 15.5 billion compared to rupees 14 billion for the current financial year. The next financial year will witness an increase of 26% in the total allocation for the health sector. We are dedicated to improve the health cover and are striving to maximize the facilities at primary level. On the other hand, we are trying to improve service delivery and enhance operational capabilities at the secondary and tertiary level. I would like to apprise this August House that through the District Health Information System, we are able to capture health-related issues of any specific area in real time. Resource allocation is done as per real needs and requirements of the people. Thus, it has improved both the process of budgeting and provisioning of health services. Now I would present some major milestones that have been achieved during the current financial year. Mr. Speaker, it is a matter of great relief that no polio case has been reported. Please order in the House. आप सीट सीधी करें, सीधा होके बैठ जाएं. चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर चल रही है. प्लीज बजट स्पीच चल रही है. प्लीज. Mr. Speaker, sir, it is a matter of great relief that no polio case has been reported from Sindh this year. I must appreciate all those who are involved in efforts of eradication of polio. I also urge the members of this House to own this initiative and make Sindh and Pakistan polio-free. I had written to the honourable members and I've got good feedback from them. I've told them to go to their constituencies and let me know of any shortcomings in the polio drive. We are religiously following it. We've got aid from the international agencies, and the Sindh government is doing its best to make sure that polio is eradicated from the province of Sindh. Sindh has ensured the availability of vaccines and has brought structural improvements in management processes. Sindh Immunization Support Program is Pak rupees 8.09 billion intervention, and it will revolutionize the vaccination and inoculation process, making our future generations healthier. An important Pak rupee 2.4 billion supplementary budgetary allocation was made to protect the Lady Health Workers Program. The federal government had abandoned the program, but the program is so important and efficient at the grassroots level that it compelled the government of Sindh to step in and own the initiative. So this initiative was started by my late leader Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. And the federal government, after the last NFC work, had committed that they will provide funds for this till the next NFC, but unfortunately they haven't announced the NFC and the funds were stopped, and we had to intervene and provided 2.4 billion outside budget to own this program, because this program is crucial. And as I said earlier, we are going to regularize the 25,000 lady health workers. In addition to, I tell you, during my term as the chief आप देख रहे हैं इस वक्त सिंध के नए माली साल का बजट वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से पेश किया जा रहा है. बजट तकरीर की जा रही है. माली साल 2017 और 18 का बजट है ये, जिसका कुल हजम 1000 अरब से जायद है, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए और अमन व अमान के लिए